Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning by Pooja. Today I'm here to tell you the concept of Roman numbers, in which I'm going to tell you the rules, how to do this, how to solve each and everything very clearly. So let's start. In Roman numerals, 7 symbols are used. These symbols are I, V, X, C, D and M. Only these 7 symbols are used in Roman numerals. I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, D stands for 500 and M stands for 1000. If we have to write 1, then we write I. 2, then we use 2 I's. If we have to write 3, then we write with 3 I's. So we can write 1 for, if we want to write 1, then we write I. If we want to write 5, then we write V. If we want to write 10, then we write X. If we want to write 50, then it comes L and so on. So now here are the rules for learning the Roman numerals. Rule number 1. The numerals I, X and C, it means 1, 10 and C, can be repeated of a maximum of 3 times only to represent a number. If we want to write any number, then we can repeat these symbols only thrice. हम इन numbers को सिर्फ 3 times repeat कर सकते हैं, not more than 3 times. The numeral I stands for 1, X stands for 10 and C stands for 100. These can be repeated a maximum of 3 times only. If we have to, so here is 1 I is 1, 2 I means 2, 3 I means 3. So ऐसे ही X stands for 10, 2X, double X stands for 20 and triple X stands for 30. And the next thing is the numeral V. V means 5, L means 50 and D 500 are never repeated. These numerals are never repeated. We cannot write them 2 times V, 3 times L or 2 times L, 3 times D, 4 times D. No, these symbols are not repeated twice or thrice. ये symbols जो हैं वो repeat ही नहीं होते हैं. सिर्फ हम I, C, X और C इन symbols को repeat कर सकते हैं. V, L और D ये repeat नहीं होते. V, L and D are never repeated. अगर हम उसको 2 times L या 2 times V लिखेंगे तो ये हमारा wrong हो जाएगा. It becomes wrong. Only once we use these symbols in a number. जब हमें कोई number लिखना है, suppose we have to write 50, then we have to write L only. If we have to write 100, हम 2 times L नहीं लिखेंगे. We write only C. If we want to write 100, then we write C. Not 2 times L. अगर हम 2 times L लिखेंगे, 3 times L लिखेंगे, so it becomes wrong. अगर हमें 150 लिखना है, तो हम C and L लिखेंगे. Then we write C and L. And in Roman numerals, 0 does not exist. 0 Roman numerals में नहीं आता. Symbols used in Roman numerals are I, V, X, L, C, D and M. 0 does not exist in Roman numeral. अगर हमें कुछ 0 लिखना है तो हम 0 नहीं लिख सकते. जैसे 1, 0, 10 हम normal counting में लिखते हैं. So here we write X. So it is the rule number 1. What is the rule number 1? Numeral I, X and C can be repeated 3 times only. Maximum of 3 times. 1 time, 2 times or 3 times. Not more than 3. Now the next rule is, if we write any smaller numeral before a greater numeral, the value of a smaller numeral is subtracted from the value of greater numeral. It means that
अगर हमें कोई नंबर लिखना है, सपोज अब हमें पता है कि आई को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, हम 4 टाइम्स रिपीट नहीं कर सकते. 5 का सिंबल हमें पता है, 5 का सिंबल वी दिया हुआ है, बट व्हाट अबाउट 4? अब हम 4 को कैसे लिखें? नाउ यहाँ लिखा है व्हेन वी राइट एनी स्मॉलर न्यूमरल. स्मॉलर न्यूमरल मीन्स आई. स्मॉलर न्यूमरल मीन्स आई. When we write any smaller numeral before a greater numeral means V. V stands for 5 here and I stands for 1. The value of a smaller number is subtracted from the value of greater numeral. 1 की वैल्यू 5 में से subtract हो रही है. 5 में से 1 की वैल्यू subtract हो रही है. So it becomes 4. It means 5 minus 1. That is equals to 4. IV stands for 4. IV stands for 4. This यहाँ पे इसका मतलब है जितने भी ये न्यूमरल्स हैं, रोमन न्यूमरल्स हैं, जो ग्रेटर रोमन न्यूमरल्स हैं, इनके साइड में हमने जो लेफ्ट साइड हमने ये स्मॉलर न्यूमरल्स लिखे हैं एज कम्पेयर टू देयर राइट साइड वन, ये इनमें से सबट्रैक्ट हो रहे हैं. दीज न्यूमरल्स आर सबट्रैक्टिंग फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल. लेट्स सी. Here it is 1 and 10. Ix means 1 is subtracting from 10. जो 1 है वो 10 में से subtract हो रहा है. It becomes 9. जैसे जब हम क्लासेस में थे, स्कूल में थे, हम लोग लिखते थे ना 9, 10, 9th, 10th, 8th. So this is 9. Ix stands for 9. 10 is subtracted from 1. 1 is subtracted from 10. इट बिकम्स 9. सो ऐसे ही अब हमें पता है कि 30 का तो हम 3 टाइम्स ट्रिपल टाइम्स एक्स लिखेंगे तो इट बिकम्स 30. बट व्हाट अबाउट ऑन 50 का भी हमें पता है, 50 का सिंबल एल है. बट व्हाट अबाउट 40 कैसे लिखेंगे? सो हेयर अगेन हम लेफ्ट साइड पे ग्रेटर नंबर के लेफ्ट साइड स्मॉलर नंबर लिख देंगे तो वो उसमें से सबट्रैक्ट हो जाएगा. एक्सएल मीन्स 50 माइनस 10. जो 10 है वो 50 में से माइनस हो रहा है एंड इट बिकम्स 40. सो एक्सएल स्टैंड्स फॉर 40. एक्सएल स्टैंड्स फॉर 40. ऐसे ही हमारे पास 100 का तो है, अब हमें 90 लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? C स्टैंड्स फॉर 100. C स्टैंड्स फॉर 100. 100 में से हम 10 माइनस कर देंगे सो इट बिकम्स 90. 100 माइनस 10 बिकम्स 90. XC का मतलब है 10 जो है वो 100 में से सबट्रैक्ट हो रहे हैं. XC means 10 is subtracting from 100, so it becomes 90. 90 का क्या रोमन न्यूमरल है? XC. The Roman numerals for 90 is X and C. As ही 400 stands for CD. D stands for 500. So 500 में से हम 100 माइनस कर रहे हैं. We are subtracting 100 from 500. So it becomes 400. ऐसे ही DM. M stands for 1000. 1000 में से हम D 100 माइनस कर रहे हैं. 1000 minus 100 becomes 900. So this is the rule number 2nd. When we write any smaller number before a greater numeral, the value of smaller number is subtracted from the value of the greater numeral. Greater numeral में से वैल्यू उसकी subtract हो रही है. So it is clear. Now the rule is 3rd. अब अगर हमें subtract तो हो गया, अब हमें addition करनी है. If we want to do any addition, then what? When a smaller numeral is written after a greater numeral, we add them both. When we have to write another number, suppose अब हमारे पास 5 तो है, 5 का हमें पता है symbol is V. What about 6, 7, 8, 9 का हमने देखा कि वो 10 में से 1 माइनस हो रहा है. Now अब हमने यहाँ पे देखा subtraction rule. Now here is the rule for addition, कि हमें addition कैसे करनी है. So here is V and 3 times 1 becomes 8. 5 if when a smaller number is written after a greater number. यहाँ पे हमने उसके लेफ्ट साइड लिखा था, अब यहाँ हम लिखेंगे राइट साइड. रूल नंबर 2nd में हमने सीखा था कि जब हम किसी न्यूमरल के लेफ्ट साइड स्मॉलर न्यूमरल लिखते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड उसके स्मॉलर नंबर लिख रहे हैं, बिफोर लिख रहे हैं, सो द नंबर विल बी
the smaller numeral is writing after the greater numeral, it means we are adding that numeral. 5, 1, 3 times 1 stands for 5 plus 1 plus 1 plus 1. It becomes 8. It becomes 8. ऐसे x stands for 10 and 2 times I stands for 12. 10 plus 1 plus 1. It becomes 12. L stands for 50. X stands for 10. अभी हमने देखा x stands for 10 and 3 times 1 stands for 3. So here we'll add 50 plus 10 plus 3. It becomes 63. It becomes 63. So here it is, our rule number 3rd. When a smaller numeral is written after a greater numeral, or you can say right side, on the right side of a greater numeral, we add them both. Then we'll add all the numbers together. तब हम सारे numbers को हम एक साथ add कर देते हैं and it becomes that number. Now I'll show you the counting of the Roman numerals. 1 stands for I. 2 stands for 2 times I. 3 stands for 3 times I. 4 means 1 and V. 5 means V. 6 means V plus 1. 7 means 5, 6 and 7. 8 means V, 1, 2 and 3 times I. It becomes 8. Now we have, अब हम repeat तो नहीं कर सकते. Now what to write? How to write 9? So we can write 1 minus 10. So 10 stands for x. Now 11 x. अब हमें इसको प्लस करना है. x 1 and it becomes 11. Now 12. Now we have to write 12 x 1 2 12. 13. Now 14 कैसे लिखेंगे? 10 लिख दिया, साथ में 4. अब हम 3 को तो रिपीट नहीं करते, I को तो रिपीट नहीं कर सकते. Now we'll write x and 14. x v 15. 10 15 and 1 16. 10 15 16 17. 10 5 15 16 17 18. Now here it is 19. अब 19 को भी हम कैसे लिखेंगे? 10 and 9. 10 and 9 becomes 19. 20 means 2 times x. 21 means double x 1. 22 x x 2. 23 x x 3. 24 x x and 4. 25 x x and 5. 26 it becomes 25 and 6. 27 25 6 7. 28 to 20 28 25 26 27 28. 29 29. Now 30 becomes 3 times x. 30 becomes 3 times x. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40 becomes x and L. 40 means from we are adding 10 from 50. 41 XL1, 42 XL2, 43 XL3, 44 XL and 4, 45 XLV, 46 XLVI, 47 XLV 2 times I, 48 XLV 8, 49 XL and 9,
50 becomes L. This is 50. Now 60 stands for L X. It means that we are adding 10 to L. L means 50 and we are adding X. 10 to the 50. So it becomes LX. 70 becomes LN double X. 80 becomes LX X. X triple X. 90 becomes, अब 90 को हम 4 times X तो नहीं लिख सकते. So we will write C. 100 stands for C and we are subtracting 10 from the 100 and 100 stands for C. So this is the counting till 100. So hello children, I hope you all enjoyed this chapter. I have tell you everything, each and every single minor rules in it. So if you like this video and you understand the concept, then please like and subscribe my channel. Thank you.